Hello students, here I'm Gayatri Kumar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management Program. So here I'm back with an online lecture series on BRM subject. So let's start the lecture. In today's lecture, we are going to discuss some topics from first unit, that is the components of theory, that is concept, constructs, definitions, variables, propositions and hypotheses, and deductive and inductive theory of research. So these points we are going to cover in this lecture. Okay, so let's start with the lecture. See, first we will discuss the components of theory. So there is five components of theory, that is concepts, constructs, variables, definitions, and propositions and hypotheses. So first component of theory is concept. So see, what do you understand by concept? See, basically हम बोलते हैं concept. We use this word in life, in routine life or daily life also. कंसेप्ट का मतलब जो बेसिक ग्राउंड्स है आपके किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, किसी लाइक आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो उसके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. तो ऐसे ही जब हम रिसर्च करने जाते हैं, हमारे रिसर्च के जो जिसपे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तो कंसेप्ट ऑफ दैट रिसर्च मस्ट बी क्लियर. तो बेसिकली कंसेप्ट्स क्या होते हैं? बिल्कुल ग्राउंड्स, बेसिक्स, किसी भी चीज के बेसिक्स इज कॉल्ड कंसेप्ट्स. तो सी, to understand and communicate the information about the objects and events, there must be a common grounds on which to do it. So if we are communicating any information or researching on a particular topic or on an event or object, then there must be a common ground on which to do it. वहां पे कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड्स होने चाहिए, कुछ कॉमन बेसिस होने चाहिए जिसके थ्रू आप समझ पाओ कि व्हाट इज द एक्चुअली द रिसर्च और व्हाट इज द एक्चुअली ऑब्जेक्टिव योर्स. ओके, तो आपके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके इवेंट्स हैं, क्या आपकी रिसर्च को करने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सब क्लियर हो. उसके लिए आप एक ग्राउंड सेट करेंगे. ओके, so that ground is known as concept, on the basis of which a user of your research can understand the information, or you can also communicate the information to them. Okay, the concept serves this purpose. A concept is a generally accepted collection of meanings or characteristics associated with the certain events, objects, conditions, situations, and behaviors. Classifying and categorizing objects or events that have common characteristics beyond any single observation concepts. See, so basically, if we talk about concept, the concept is the basic grounds on the basis of which we can understand about the objects or the information that is collected or that is done. Okay, these are the basic grounds of it. Now, there is some importance of concept research. To see what is the importance of the concept in research. Clear concept ensures success with design hypothesis. Using concepts, the success of the research depends upon how clearly we conceptualize and how well others understand the concept we use. So, for doing research, your concept must be clear. Okay, if your concept is clear, then this is very easy to understand the user of the research, for the user of the research, and your success is also depends on your concept. If the concept of your research is very clear, then your research will be more successful. Okay. Now, second component of the theory is construct. So, see what is the construct? A construct is an image or abstract idea specially invented for given research. So, see, construct means the image that you are building in your mind. Okay, the idea that is built in your mind. So construct जैसे हम बात करते हैं construction of a building और कुछ भी construct करने का, that means आपके mind में उस चीज के लिए कहाँ image बनती है. Suppose let's have an example. I told you there is a table. Okay, आपने table देखा नहीं है, मैंने अपने research में बोला there is a table. Then आप उस research को पढ़ोगे तो किसी के mind में आएगा एक round table, किसी के mind में आएगा एक square table, किसी के mind में कुछ और आएगा. तो this is the construct, that the image that you build
थ्रू द रीडिंग ऑफ रिसर्च आपके रिसर्च को कोई रीड करेगा या कोई यूज करेगा तो उसके माइंड में क्या एक इमेज और क्या एक कंस्ट्रक्शन क्या एब्स्ट्रैक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट ओके A construct is an image or abstract idea specially invented for a given research. Table is an objective concept. We can find the table and we have image to the characteristics of all the table in our mind. And an abstraction like personality is much more difficult to visualize. Such abstract concepts are often called constructs. Okay, तो इस टाइप के कंस्ट्रक्ट्स अगर मैं आपको बोलूं पर्सनालिटी एक पर्सन है तो आपके सबके माइंड में वो पर्सन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट ओके we build constructs by claiming the simple more concrete concept especially when the ideal and image is not subject to direct observation okay then next component is definition so definitions are the one way to reduce the danger see definitions are like जैसे आपके माइंड में एक मैंने जैसे आपको बताया टेबल देन you build an image in your mind that the table is round or square or whatever okay so definition क्या करेगा definition आपको उस इमेज को क्लियर करेगा कि एक्चुअली में वो चीज है क्या तो ये रिड्यूस करता है डेंजर क्योंकि आपने अपने रिसर्च में कोई बात लिखी उसको सामने वाला किस तरीके से लेगा किस एस्पेक्ट में लेगा दिस इज नॉट श्योर कोई इसका गलत मीनिंग भी ले सकता है कोई सही मीनिंग भी ले सकता है कोई डिफरेंट वे में इसका मीनिंग ले सकता है तो डेफिनेशन क्या करेगी ऐसे डेंजर को रिड्यूस करेगी okay so definition will give you a fixed thing that we are talking about this okay so definitions क्या बताएगी कि अगर हम टेबल की बात करें तो we are talking about a round table जिसकी हाइट और जिसकी लेंथ सॉरी जिसकी लेंथ और ब्रॉडनेस दिए गए ओके तो डेफिनेशन क्या होगा आपको क्लियरली चीजों के बारे में बताएगा जो आपके माइंड में जो इमेजेस बन रही है उसके बारे में क्लियर करेगा तो कंस्ट्रक्ट में आपने इमेज बनाई देन डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन आपको वो चीजों को क्लियर करेगी okay so this is a process of this is a process or procedure to clear your mind the components of the research or the components of the facts okay तो आपके जो components है research के उसको clear करने के लिए एक procedure है that is called definition okay then next is variables so what is the variables variables are those factors or values on which you are doing the research right तो वेरिएबल्स क्या जिनके ऊपर ऐसे फैक्ट्स और जो चीजें फिनोमेना जो जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स so variables is anything that have various values the values can differ in varies from time for the same object or person of the same time for the different object of the person so variables may be different for the different people and the different research or for the different object okay so if you have different object then your variables will also be different if you are talking about different group of person then your variables will also be different in practice the term variable is used for synonyms for the construct or object being studied so variable is called the object which is being studied which you are going to study is called variable in this context a variable is the symbol of an event act characteristics traits or the attributes that can be measured so variables are basically the characteristics, traits, or attributes of your fact or of your topic on which you are going to research that can be measured and which can be assigned numerical values. So variables are that factors which can be measured or which can be assigned a numerical value. Example, production unit. If you are researching on your production unit, that is your variable. And variable will always be assigned that kind of factors which can be counted or which can be measured in numerical values. Okay. Like second example is absenteeism. If there is a higher absenteeism in your organization, then these absentees you can count and you can measure. Okay. Now there is types of variables. So there are four kinds of variables. First is dependent variable. So the dependent variable is the variable of primary interest to the researcher. Researchers are most interested in the relationship among the variables. So there is two types of variables. First is dependent variable and independent
dependent variable is the variable the result of which variable depends on another factor. Okay? Dependent variable वो variable होंगे जो दूसरे किसी variable पे depend करेंगे. Like if we talk about the sales of the company, okay? So see, let's say an example. A manager is concerned that the sale of new product introduced after testing market, it does not product introduced, it does not meet the with the expectation. So see, आपने एक नए प्रोडक्ट बनाया जिसकी सेल्स आपकी किसके ऊपर, आपने मार्केट में रिसर्च किया, उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस ना, उस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आपकी सेल्स सक्सेस नहीं हुई, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे सेल्स उतनी सेल्स नहीं है. ओके, so in this condition the expectations of customer is independent variable. Okay, and the sales is dependent variable on which variable, on the interest of the customer or the expectations of the customer. So dependent variable and independent variable. Dependent variable is that variable which is depend on any other variable. Okay, and independent variable which is independent in itself or not dependent on any variable. Okay, so एक और हम बात करें कि हमारी सेल्स डिपेंड करती है जो हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं उसके. ओके, अगर हम सेल्समैन को ज्यादा कमीशन देते हैं तो सेल्समैन ज्यादा सेल करता है, और अगर हमारा रेट ऑफ कमीशन कम है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है, जो सेल्समैन है वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है सेल्स में. तो इस कंडीशन में सेल्स क्या होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल. किस पे डिपेंडेंट होगी, कमीशन. जो हम कमीशन सेल्समैन को दे रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल इज so an independent variable is one that affects the dependent variable in either positive or negative. So independent जो variable होगा dependent variable positive और negative दोनों तरीके से impact कर सकता है. Okay. Okay. See, there is an example. A successful new product development has an influence on stock market price of the company. Okay. See, if there is a successful new product development, that means your stock market price of your stock market price will be increasing. So your stock price on market, sorry. अगर देखिए आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो अच्छा डेवलपमेंट प्रोडक्ट है, जो जिसकी सेल्स में डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलप्ड कोई प्रोडक्ट डेवलपिंग प्रोडक्ट है जिसका डेवलपमेंट अच्छा है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट है आपका, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो वैल्यू होगी मार्केट में, जो आपके प्राइसेस होंगे, स्टॉक के प्राइसेस होंगे, वो इंक्रीज करेंगे. सिक्योरिटी के प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. तो सिक्योरिटी के प्राइसेस आपके किस पे डिपेंड करते हैं, आपके प्रोडक्ट पे. तो प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल and the market price of the stock is the dependent variable. Okay. Yes. Now third is moderating variable. So what do you understand by moderating variable? So in each relationship among variables there is at least one independent variable and dependent variable. The moderating variable is one that has strong contingent effect on the independent variable and dependent variable relationship. So moderating variables are those variables we have which have that have a strong effect on the relationship between independent variable and dependent variable. So see, let's say an example. See, there is an example. If you study for 5 hours, then you will completely get pass. अगर आप continuously 5 hours एक दिन में study करते हो तो आप definitely pass हो जाएंगे. एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे. Okay, but there is a moderating variable. So इसमें dependent variable क्या हो गया आपका, dependent variable कौन सा है, एग्जाम्स में आप पास हो पाएंगे. कब पास हो जाएंगे, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे कितने आवर्स आप स्टडी कर रहे हैं. तो आवर्स ऑफ स्टडी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड विल गेट पास इन डिपेंडेंट वेरिएबल. पास होने के चांसेस क्या है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इनके बीच में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल दैट इज IQ लेवल. कोई स्टूडेंट हो सकता है कि 3 आवर्स में पढ़ के एग्जाम को क्रैक कर ले, तो हो सकता है 7 आवर्स में भी ना कर सके. तो इसके बीच में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल है दैट इज IQ लेवल. IQ लेवल जिसका जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना जल्दी कैच करेगा चीजों को, उतना कम टाइम पे स्टडी करना है. Then next is intervening variable. So what do you understand by intervening variable? A variable that helps to understand the relationship between two variables. What is the relation between two variables? By intervening variable, we can understand what is the
relationship between the two variables. If there is two variables that is independent or dependent variable, then what is the relation between them? So let's give an example. There is poverty, कुछ poverty है आपके सोसाइटी में, और उसकी वजह से आपकी जो लाइफ का जो टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ जो है उसके ईयर्स ऑफ लाइफ आपके क्या है, कम है। आपकी पॉवर्टी की वजह से आपके ईयर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ आपके कम है। सपोज एज लाइक जैसे पर हेड एज क्या है, कम है ड्यू टू पॉवर्टी। तो ऐसा क्यों है? किसकी वजह से? इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो, क्या हुआ? एज ऑफ द पर्सन। एज ऑफ द पर्सन इज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन पॉवर्टी। पॉवर्टी इज independent variable. So independent variable is poverty, and the life of the person is dependent variable. अब independent variable जो है दैट इज poverty, और आपका एज ऑफ लाइफ में क्या क्या सेंस है, क्या रिलेशनशिप है? तो इसके बीच में रिलेशनशिप ये है कि जो पुअर लोग हैं वो अपनी अच्छी मेडिकल सर्विसेज नहीं ले पाते हैं, और वो अच्छा हेल्थ केयर नहीं एक्सेस कर पाते। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है? इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या है इनके बीच में? इंटरवेनिंग वेरिएबल है इनके बीच में कि आप जो भी जो पुअर लोग हैं उनके पास लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, इसकी वजह से उनकी लाइफ एज जो है पर हेड जो एज है वो कंपैरेटिवली कम है। So let's see. For example, the commission compensation system will lead to a higher sale. Okay, तो आपका the same example कि आपका कमीशन जो है, कमीशन जो compensation system है will lead the higher sales productivity by increasing overall consumption by overall compensation. Mere commission compensation system is independent variable here. Sorry. So see, the commission compensation system will lead to higher sales. Okay, by increasing overall compensation. Here, commission compensation system is independent variable, and higher sales productivity is dependent variable, while the overall compensation increases intervening variable. तो आपकी कमीशन की वजह से आपकी सेल्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या? कि आप अगर कंपनसेशन को इंक्रीज कर देंगे, कमीशन कंपनसेशन को इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, डिक्रीज कर देंगे तो कम होगी। इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या? कंपनसेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा है, उसके बेस पे आपकी क्या सेल्स प्रोडक्टिविटी डिपेंड होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो क्या हो गया आपका कमीशन कंपनसेशन सिस्टम। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स प्रोडक्टिविटी, और इंटरवेनिंग किसकी वजह से? इन दोनों के बीच में ऐसा ये रिलेशन है ही क्यों? किसकी वजह से? कंपनसेशन की वजह से। Okay, if you give the higher compensation, then higher will be sales. तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों में रिलेशनशिप किसकी वजह से है? कंपनसेशन की वजह से। कंपनसेशन अगर आप ज्यादा दोगे तो प्रोडक्टिव सेल्स ज्यादा होगी, और सेल्स प्रोडक्टिविटी ज्यादा, कंपनसेशन कम दोगे तो सेल्स कम। Okay, then आता है extraneous variables. So there are many variables that are not intentionally studied in your experiment or test. When you run an experiment, you are looking to see if one variable, the independent variable, has an impact on another variable, the dependent variable. These undesirable variables are called extraneous variables. When you are studying the two variables, that is independent and dependent variables, and all of a sudden any any undesirable variable is occurs, then that undesirable variable is known as extraneous variable. जब आप कोई स्टडी कर रहे हैं उसमें आप दो फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं, बीच में कोई एक वेरिएबल आपका आ जाता है, आपका हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। ओके, यस। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपोजिशंस एंड हाइपोथेसिस. So a proposition is a statement about the observable phenomenon. Basically, see what is the propositions and hypothesis. Hypothesis is a imagination. Right? Hypothesis is a imagination that or a guess. You can say hypothesis is a guess about any fact or like जैसे आपके जैसे हमें अभी हमने एग्जांपल दिया कमीशन और सेल्स का, तो कमीशन बढ़ाने की वजह से आपका सेल्स बढ़ेगा, ऐसा आपने सिर्फ एक इमेजिनेशन
आपका ये गैस इज दैट कि आपके कमीशन के इंक्रीज करने पे आपका सेल इंक्रीज होगा। तो दैट इज एन इमेजिनेशन ओनली अ गैस होती है। जब आप गेस करते हैं इन सिंपल वर्ड, जब आप गेस करते हैं इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, इसके होने की वजह से ऐसा हो भी सकता है, ऐसा ऐसा नहीं भी हो सकता है, दैट इज एन इमेजिनेशन ओनली। ओके, so proposition is a statement about observable phenomena concepts that may be judged as true or false. So proposition is a statement about the observation, जो आपने ऑब्जर्व किया उसका एक स्टेटमेंट है that can be true or false at the same time. When a proposition is formulated for empirical testing, people call it hypothesis. और जब इस proposition को इन propositions का practical life में apply करते हैं, तो that is called hypothesis. As a declaration statement about the relationship between two or more variables, the hypothesis is the tentative and the conjectural nature. So if we are talking about two variables, then hypothesis and that is the tentative data. कि ऐसा ऐसा tentative है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। कंजेशनल नेचर कहते हैं कि दो चीजों को आपको कंजेशन करता है, वो एक साथ लेकर आता है और उसके बारे में कुछ गैसेस करता है कि इट मे बी पॉसिबल और नॉट। ये जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है, आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि कंडीशन की वजह से हमारी सेल इंक्रीज होती है, ना कि एक हाइपोथेसिस है आपने गैस लगाया। अब ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं हो सकता, तो इट मे बी और इट मे बी। So hypothesis is a famous statement explaining some outcome in its simplest form. A hypothesis is a guess. A sales manager may hypothesize that the salespeople who are highest in product knowledge will be the most productive. तो आपने hypothesis आपने guess लगाया कि sales manager ने hypothesize किया कि the people who are highest in product knowledge will be the most productive. जिसको प्रोडक्ट का हाईएस्ट नॉलेज है वो मोस्ट प्रोडक्टिव होगा, तो ऐसा आपने गेस करा है। अब ऐसा हो भी सकता है और मे बी हाइपोथेसिस आपकी ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकती है। हो सकता है जो प्रोडक्ट नॉलेज रखता है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा ना हो एज कंपेयर टू अदर्स, ऑल्दो इसमें प्रोडक्ट नॉलेज है लेकिन उसको प्रेजेंट करने का वे नहीं है। और एट द सेम टाइम एक पर्सन है जिसको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो उस केस में जिसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छी है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, वो ज्यादा प्रोडक्टिव वे में काम करता है। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द सेल्समैन, तो एक सेल्समैन जिसका प्रोडक्ट नॉलेज ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो वो क्या करता है, वो क्या हमने गैस लगाया कि वो ज्यादा सेल्स कर पाएगा, लेकिन जब एक्चुअल जो रिजल्ट आया उससे क्या हमको पता चला कि नहीं, जो दूसरा पर्सन था वो ज्यादा सेल्स करता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है और प्रोडक्ट इसको प्रोडक्ट नॉलेज होते हुए भी इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, प्रेजेंट नहीं करता है अपने प्रोडक्ट को, इस वजह से ये सेल्स भी नहीं करता है। ओके, so when a proposition that is empirical testable, that is called hypothesis. आपने कोई स्टेटमेंट को गेस लगाया, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, उसकी टेस्टिंग की, तो उस अगर टेस्टिंग करोगे, अब जब तक उस प्रपोजिशन की आप टेस्टिंग नहीं करोगे, गेस टेस्टिंग नहीं करोगे, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। और जब उस प्रपोजिशन को आप टेस्टेबल बनाओगे, टेस्ट करोगे उसका, तो दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके, यस, नाउ there is two type of basically hypothesis. First is descriptive hypothesis and second one is relational hypothesis. So what is descriptive hypothesis? They state the existence, size, form or distribution of some variables. So in a descriptive hypothesis you tells about the existing size, form or distribution of the characteristics of the particular variable. Okay, and in relational hypothesis, the research question format is less frequently used within the situation called the relational hypothesis. These are the statements that describe the relationship between the two variables. So, this descriptive hypothesis, you tells us about the characteristic existence size of the two variables. Whereas in relational hypothesis, you tells us about the researcher tells us about the relationship between